यहाँ पर कोई निर्मल बाबा नहीं बैठे हुए हैं कि अगर आपने गलत बोल दिया कि समोसा 4 महीने पहले खाया था तो कृपा आनी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कृपा चलती रहेगी। बस आप इस क्यू कार्ड के आइडिया को ध्यान से सुनिए कि Hello friends, how are you doing today? You're watching YouTube channel Raman Ielts Coaching and I'm your Ielts expert Mr. Ramandeep Singh, and in today's video we are going to discuss one of the latest cue card that the examiner may ask you, and the cue card is, let's quickly check out. Talk about your favorite author or writer. Name of the author, what kind of books he write, what do you like about this person, and would you like to personally meet this person? Well, there is always a cue card related to books in the IELTS exam, your favorite book or a book that you would like to write, and the examiner can ask you this question this time, that talk about your favorite writer. I have few cue cards already available on YouTube that you can watch related to the similar topic, in which I usually talk about my favorite writer, that is Chetan Bhagat. I must say that if you haven't read any of his book, do give them a go, because you are going to love the way he writes and his style of writing. Everything is just amazing, and whenever he come up with a new book in the market, it always turns out to be a bestseller. In today's video, I'm going to share the idea behind this cue card. As you know that I always recommend, if you want to score high and you want to speak fluently and prepare a cue card, you must come up with at least 4 to 5 elements in your mind related to different cues of the card, and then describe each and everything in detail. Never be in haste, don't speak too fast, and do not present the ideas without explanation. Otherwise, your answer would always be short. It would never ever be close to 2 minutes time. So for this reason, try to express the things as much as you can. So as you know that I always share the idea behind in the regional language Hindi, and then I will share the sample answer with you. Let's quickly check out that what we can discuss about Chetan Bhagat. हम कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट राइटर चेतन भगत है, एंड यू केम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड्स. आज से 2 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, जितनी मर्जी बात कह सकते हैं. यहाँ पर कोई निर्मल बाबा नहीं बैठे हुए हैं कि अगर आपने गलत बोल दिया कि समोसा 4 महीने पहले खाया था तो कृपा आनी बंद हो जाएगी. यहाँ पे आपकी कृपा चलती रहेगी. बस आप इस क्यू कार्ड के आइडिया को ध्यान से सुनिए कि 4 साल पहले या 5 साल पहले आपके फ्रेंड ने आपको आपके बर्थडे पर एक बुक गिफ्ट किया था. सो यू कैन से इट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड. यहीं से आपका एक और भी क्यू कार्ड बन जाएगा अगर आता है तो. वेल, चेतन भगत की एक बुक उसने आपको गिफ्ट की जिसका नाम था 2 स्टेट्स. वेल, इससे पहले आपको चेतन भगत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, बट फ्रॉम योर फ्रेंड यू गॉट टू नो दैट वो इंडिया का बेस्ट राइटर है. उसके कई सारे नॉवेल्स हैं और ज़्यादातर नॉवेल्स बेस्ट सेलिंग हैं, और इनके बहुत सारे नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ भी बने हैं. ये सारी चीज़ों को सुनकर आप काफ़ी हैरान हुए. चाहे आपका इंटरेस्ट बुक रीडिंग में नहीं है तो भी उसने आपको ये बुक दी, और उसने ये कहा कि अगर तू ये बुक पढ़ लेगा तो तेरा बुक्स के प्रति या रीडिंग के प्रति इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप होगा. और ऐसा ही हुआ. आफ्टर फ्यू डेज़ जब मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट की, आई थॉट कि मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे. ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी कि 400-500 पेजों की किताब आपने सिर्फ एक हफ्ते में ही पढ़ दी. आप इस बुक की स्टोरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. 2 स्टेट्स, जो कि एक सोशल इशू के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ज़्यादातर पेरेंट्स एग्री नहीं करते बच्चों की इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर. देन वी गेट बैक टू द राइटर वंस अगैन. फॉर एग्जाम्पल, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है. थ्रू आउट द बुक इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से रीडिंग को ये बहुत मज़ेदार बना देता है. अदरवाइज़ रीडिंग इज़ सच अ बोरिंग एक्टिविटी फॉर पीपल. मैं एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि इसका प्राइस जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि इसके ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं वो टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, यंगस्टर्स हैं. तो वो बड़ी आसानी से इसकी बुक्स मार्केट से बाय कर सकते हैं, जितने कंफर्टेबल प्राइस पर ये अवेलेबल हैं.
सो ऐसी और कई सारी चीज़ें अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल बुक इज़ इन इंग्लिश, सो इट रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, क्योंकि ये बात आप बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन किसी के बारे में भी हमेशा जोड़ सकते हैं. फाइनली यू कैन से कि ऑफ कोर्स आप इसे आजकल ट्विटर पर भी फॉलो कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं टू गेट टू नो कि इसकी आने वाले टाइम की कौन सी बुक्स हैं, सो दैट यू कैन परचेज इट. सो ऑल दिस वुड बी एनफ टू टॉक अबाउट इन दिस क्यू कार्ड, एंड आई सर्टनली बिलीव कि आराम से आपकी 2 मिनट की स्टोरी बन जाएगी. तो आइए देखते हैं कि इसका सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए. Well, I keep profound interest in reading books and have read books of different genres and of different writers. And here I would like to talk about my favorite writer, Chetan Bhagat. I came to know about him when I received his best-seller book, Two States, as a gift from a friend on my birthday few years ago. I was happy to receive this book but didn't know much about it and the writer. But my friend told me that he's the best Indian writer and his most books sell like hotcakes. He told me about the book Two States, which is based on a social issue of intercaste marriage of my country. So I read it with curiosity on my friend's advice. I thought it would take me few weeks to finish reading it, but I read the whole book in just 5 days as it was so interesting. I really like the writer's style. He uses a very simple language that anyone can follow comfortably. In fact, the best element is the sense of humor of this writer, which makes reading quite interesting and fun. I had a great laugh while reading this book. Humor is in fact a characteristic of his every book, as I have read many of his books later. Now, I frequently follow him on social media too to get to know about his upcoming writings, as I love the way he writes. Books of Chetan Bhagat are fairly priced as well, so that his followers can easily buy and read, since the vast majority of his readers is youngsters. I believe he will continue to bring his good work and entertain and educate the society with his amazing writings in future as well. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world in less than 30 seconds. This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam, no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download CLASSPLUS and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others, as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects in INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.